हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि आप नोटिस किए होंगे, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। सो एनीवे, टुडे आई केम अप विद अनदर DIY video that I will be making from waste coconut shell. Stay tuned with me and keep watching the video. Okay, the base material is the same for all three DIYs, and that is coconut shell. Now I am taking a sandpaper to smooth out this surface. कोकोनट सेल को अच्छे से क्लीन करने के बाद नाउ आई एम यूजिंग सम क्ले एंड वी विल मेक अ बॉडी पार्ट ऑफ दिस सिरप यूजिंग दिस क्ले. Now we have to wait until the clay is completely dry, then we will color it with acrylic colors. So at the first I am going to apply white acrylic color on it for the base color. Okay, the white paint has completely dried out. Now I am applying mustard yellow color here. It's ready. Now let's see how it will look after planting something into it. For the second DIY, I will just repeat the exact same steps. कोकोनट सेल को अच्छे से क्लीन करने के बाद नाउ आई विल मेक सम लिटिल फ्लावर्स यूजिंग क्ले. क्ले पूरा ड्राई होने के बाद एज अ बेस कलर मैं यहाँ पे यूज करूँगी व्हाइट एक्रेलिक कलर. बेस कलर पूरा ड्राई होने के बाद मैं सेकेंड को दूंगी. अगर आपके पास एक ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं है तो आप एक साथ इस थ्री कलर को मिक्स करके एक कलर बना सकती है, जैसे कि मैंने बनाई. Planter is ready. Now plant your favorite plant into it. इस कोकोनट सेल को भी मैं एक प्लांटर की तरह यूज़ करूँगी. सो एट द फर्स्ट मैं क्ले यूज़ करके इस प्लांटर की एक स्टैंड बनाऊँगी. मैंने बेस कलर यूज़ कर लिया है एंड इस बेस कलर थोड़ा सा ड्राई होने के बाद मैं इसे एक सिंपल लुक दूँगी. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग लेमन येलो एक्रेलिक कलर एंड टील ब्लू कलर वाइट एक्रेलिक कलर. Keep it 1 to 2 days and then we'll apply varnish on it. Really hope you like this video, and if you do, please press the like button and subscribe if you are new here. Thank you so much for watching this video. I will see you all in the next video soon. Until then, take care. Bye.